topic for today's discussion is binary addition, binary subtraction and binary multiplication. As we all know that a digital signal can be represented in a decimal form, but mainly it is represented in a binary form. When a signal is there, we represent it by a number 1, and when it is not there, we represent it by number 0. Supposing there are two inputs, we represent them in a binary form by number 2. Now in binary system, we represent the number in forms of zeros and 1. The base of the binary number is 2. So we write a binary number in the form 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2 and 2 raised to the power 3 and so on. Right. So it is 2 raised to the power 0 is 1, 2, 4, 8 and 16 and 32 and so on. Supposing we want to write, let us convert the numbers from 0 to 9. Zero is 0 in binary form. 1 is 1. 2 plus 0, 1 0. 3 is 2 plus 1, so 1 1. 4 1 0 0. 5 is 4 plus 1, so 1 0 1. 6 4 plus 2 6. 7 is 1 1 1. 4 plus 2 6 plus 1. 8 plus 0. 9 8 plus 1 9. So we have represented these numbers from a decimal system to a binary form. Now first of all, we will learn binary addition. It is very simple. We know that this is binary addition. It will follow the basic rules of addition. 0 plus 0, all of you know it is 0. 1 plus 0, 0 plus 1. Now 1 plus 1, basically it is 2. How do we write 2? 1 0. These are the rules which are to be followed for doing binary addition. Now let us say we add 2 plus 3. What is 2 plus 3? It is 5. Now we will do it in the binary form. Write 2. We have to do 2 plus 3. All of you know this is equal to 5. Now write 2 in the binary form. 1 0. What is 3? Add it. 0 plus 1, 1. 1 plus 1, 1 0. So what is 1 0 1? 5. So 2 plus 3 is equal to 5. So this is the basic concept of binary addition. It can be a long number, say 1 1 0 1 plus 1 0 1 1. So what will be 1 plus 1? 2, that is 0 1, carry 1. 1 plus 1, 2, 0, carry 1. 1 plus 1,
2, that is 0, 1. Now 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3. How do we write 3, 1, 1? So this is the basic. We do binary addition. I repeat it. Say we have 1 plus 1 is 2. 2 we write 1, 0, 0, 1 carry. 1 plus 0 is 0, 0 plus 1. 2, 2, 0, 1 carry. 1 plus 1, 2, 0, 1 carry. Now 1 plus 1 plus 1. It is 3. Then we write 3 as 1, 1. So this is binary addition. Let us learn binary subtraction. The rules are very similar to the decimal system. We have 0 minus 0 is 0, 1 minus 0 is 1. What is 1 0 in binary? 2. 2 minus 1 is 1 and 1 minus 1 is 0. So the rules we shall follow for doing subtraction are as follows. Now to do binary subtraction, we use basically two methods. One is 1's complement method and other is 2's complement method. We will start with the 1 complement method. This is 1's complement method. Say, I will explain you with an example. We have to do, say, 8 minus 6. What is 8 minus 6? All of you know. 2. Now we have to convert. We have to use binary numbers to carry out this. Now in binary we have 1, 2, 4, 8. These number system. What is 8? And what is 6? 4 plus 2, 6. So it is 0, 1, 1. Number 6 is represented by 0, 1, 1, 0. So we have to do 1, 0, 0, 0 minus 0, 1, 1, 0. What we do? The number which is to be subtracted, जिस नंबर को हमने subtract करना है उसका पहले 1's complement लेना. 1's complement क्या होता है? जो 0 है उसको 1 कर दो और 1 को 0 कर दो. अब 1's complement of 0, 1, 1, 0 is 0 को 1 कर दो, 1 को 0, 1 को 0, 0 को 1. अब हमने 1's complement लेके उसको ऐड कर देना उसमें से. तो सी 1, 0, 0, 0 और प्लस 1's complement क्या है? 1, 0, 0, 1. अब इसको ऐड कर देते हैं. 0 plus 1, 1, 0 plus 0, 0, 0 plus 0, 0. 1 plus 1, 2, that is 1, 0, 0 and 1 is carry. We have to add this carry. So plus this carry. So we have 1 plus 1. So 8 minus 6 is equal to 2. 2 is 1, 0. 2 is 1, 0. So this is the method by using method
to do subtraction using ones complement method. Now, if we subtract a small, this is subtracting a smaller number from a larger number. And if we subtract a larger number from a smaller number, how we are going to do it? Let us try it. 6 minus 8, you know it is equal to minus 2. Now, in binary form, we write 6 as 0, 1, 1, 0, 4 plus 2, 6, 0, 0, 1, 1. And how do we write 8? 1, 0, 0. Or 8 plus 0 plus 0 plus 0. 1, 0, 0. Now we have to use ones complement method. Complement of 8, ones complement is convert 1 into 0 and 0 into 1. So 0, 1, 1, 1. Add this number. 0, 1, 1, 1. Now you add it. 0 plus 1 is 1. 1 plus 1, 2, that is 1, 0, 0, 1. 1 plus 1 plus 1 is 3. 3 is 1. Carry 1. 1 plus 0 plus 0, 1. Now this is not 2. This is now when there was no carry we have added. This answer is in ones complement form. We have to convert again the takes its ones complement to get the actual answer. Ones complement of the answer 1, convert 1 into 0, convert 1 into 0, convert 0 into 1, 1 into, answer is minus 2. When there was no carry, the answer is in negative. We have to take the ones complement of the number which we are subtracting, add the two numbers, get an answer. There will be no carry. Whatever is the answer, जो भी आंसर आता है उसका ones complement लेना है to get the actual answer. जैसे 0 minus 1 ये करना, आंसर क्या है -1. अब 0 1 का ones complement क्या है? What is the ones complement? 0. What is 0 plus 0? 0. This answer is in ones complement. There is no carry. Takes its complement, ones complement to get the answer. So what is the complement? Ones complement of 0 is 1. Since there was no carry, answer is minus. Do any try to subtract two numbers from a smaller number from a bigger number from a smaller number. Like this was 8 minus 6. Subtract 6 minus 8. If we are subtracting a larger number from a smaller number, like यदि हम जो है 8 minus 6 करते हैं, जो आंसर आता है वही आंसर है. लेकिन यदि वो कैरी नहीं आता तो जो आंसर आता है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना होगा टू गेट द एक्चुअल आंसर. अदर मेथड टू डू सब्ट्रैक्शन इज टू कॉम्प्लीमेंट मेथड. ये भी सिमिलर है वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से. लेट अस अंडरस्टैंड टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड. व्हाट वी डू, अगेन आई एम टेकिंग द सेम नंबर, से 8 minus 6, that is 2. Now convert 8 into binary. 1, 2, 4, 8. 8 is 1,
0 0 0. What is 6? 4 plus 2 6. 0 1 1 0. In 2's complement method, we take the 1's complement of that number. जिस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका 1's complement लेके एक 1 नंबर ऐड कर देंगे. तो ये जो 1's complement of 0 1 1 0 is 1 0 0 1. 1's complement आ गया, इसके साथ प्लस 1 ऐड करो. So it is 1 plus 1 2, that is 1 0 0 carry 1 1 0 1. अब इस नंबर को हम 8 से ऐड करेंगे. व्हाट इज 8? एंड वी ऐड दिस नंबर 1 0 1 0. 0 plus 0 0. 0 plus 1 1. 0 plus 0 0. 1 plus 1 0 कैरी. ये जो कैरी आया इसको इग्नोर कर देंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे. कैरी को इग्नोर कर दिया तो आंसर क्या आ गया? 0 0 1 0. दिस इज 2. 0 0 1 0 इज 2. सो वी आर, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं. मान लो 8 minus 6, आंसर इज 2. 8 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया 1 0 0. 6 को कन्वर्ट किया 0 1 1 0 0. 4 plus 2 6, so 1 1 0. ये आ गया. अब इनको अब 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से करना है. 6 का 2's कॉम्प्लीमेंट लेना. क्या करना है? पहले 1's कॉम्प्लीमेंट लेना है और उसके साथ जो है 1 ऐड कर देना. 1's कॉम्प्लीमेंट 6 का जो है 0 1 1 0 का 1's कॉम्प्लीमेंट क्या? 0 का 1 1 का 0 1 का 0 0 का 1. ये आ गया. इसके साथ 1 ऐड कर दिए. 1 plus 1 is 1 0. So 1 0 0 and 1. ये आ गया 2's कॉम्प्लीमेंट. इसको हमने जो है इस नंबर से ऐड करना. तो 1 0 0 0 प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट. आंसर इज दिस. देयर इज अ कैरी. 0 plus 0 is 0. 0 plus 1 is 1. 0 plus 0 is 0. 1 plus 1 is 0. कैरी 1. कैरी 1 को इग्नोर कर देना और आंसर हमारा जो है वो हमें मिलेगा. ये था जब हमने एक छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया बड़े नंबर से. यदि हम रिवर्स करें मान लो 6 minus 8 करें, आंसर क्या है? अब क्या करें? 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से करते हैं. अब क्या है? 6 को कैसे लिखेंगे? 4 plus 2 6. So 0 1 1 0. अब 8 को माइनस करना है. 8 का 1's कॉम्प्लीमेंट लेना. व्हाट इज 8? 1's कॉम्प्लीमेंट 1. हाउ वी राइट 8? 1 0 0 0. अब 8 का 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1's कॉम्प्लीमेंट of 8, convert 1 into 0 and 0 into 1 1 1. ये हो गया. ये 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया. इसके साथ 1 ऐड कर दो. 1 plus 1 0 plus 1 carry. 1 plus 1 is 2. That is 1 0 0 1. 1 plus 1 is 2. That 0 1 carry 1. ये आ गया. ये 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया. ये 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया. Two's complement of 8. Now we have to add this 2's complement with this number. Now 1 0 0 0. Add it. 0 plus 0 0. 1 plus 0 1. 1 plus 0 1. 0 plus 1 1.
अब ये क्योंकि कैरी नहीं आया, ये हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, ये टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आंसर है। एक्चुअल आंसर लेने के लिए इसका भी आंसर का हम टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे। वो कैसे लेंगे? पहले उसको पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे इसका। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1,1,1,0 इज कन्वर्ट 1 into 0, convert 1 into 0, 1 into 0, 0 into 1, add 1, one plus 1 is 2, how we write 2, 1 0. Since there was no carry, answer is 1 0 क्या होता है 2, तो -2। तो ये था हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। यदि तो कैरी आता है टूज कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद, एडिशन करने के बाद कैरी आता है, कैरी को इग्नोर कर दो, जो आंसर आता है वही आंसर है। यदि टूज कॉम्प्लीमेंट लेके कैरी नहीं आता तो जो आंसर आता है उसका दोबारा से टूज कॉम्प्लीमेंट लेके तब हमें एक्चुअल आंसर मिलेगा। सो यू ट्राई यूजिंग सिंपल नंबर्स एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट।